Hello my dear viewers, welcome to Simplified Civil and Geotechnical Engineering channel. I am Akshay Jaiswal. In this video, I am going to explain total solids, suspended impurities, dissolved impurities, hardness, types of hardness, classification of hardness and effects of hardness. Also, chlorides, pH value and effects of pH value and determination of pH value by electrometric method. So let's start the discussion. Lecture number 11, chapter number 1, sources, quantity and quality of water. So we will start with part 1 of chemical characteristics of water. Now we will see the syllabus points which are covered in this video. First one is chemical test, total solids, suspended solids, dissolved impurities, measurement of total solids and permissible standards. Next one is hardness, types of hardness, temporary hardness, permanent hardness, difference between temporary and permanent hardness, classification of water according to hardness, and effects of hardness when in excess. Next point is chlorides and effects of chlorides, determination of chlorides in laboratory, dissolved gases, pH value and its procedure, importance of pH in water supply, and last, standards for drinking water. Now let's discuss about chemical test. तो चलिए देखते हैं chemical tests. First one is total solids. Total solid consists of the following. First one is suspended impurities. It includes colloidal matter and settlable matter which settles in sedimentation tank. Means the particles which settle down due to their own weight under the effect of gravity. तो देखते हैं सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज क्या होता है. सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनको वेट होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो पानी में नीचे जाकर जमा हो जाते हैं, ऐसे पार्टिकल्स, इन्हें कहा जाता है सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज. नेक्स्ट वन इज डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्ट्स, दिस सॉलिड्स may cause hardness, alkalinity or salinity. Let's see what is meaning of dissolved impurities. These are impurities which are not visible to our eyes as they are dissolved in water. देखते हैं dissolved impurities क्या होता है. Dissolved impurities का मतलब ऐसे impurities जो हम देख नहीं सकते और जो पानी में पूरी तरह से मिल चुके हैं, ऐसे particles जैसे कि salts and minerals. Our next point is measurement of total solids. Point number 1, water is filtered and the residue on the filter paper is weighed and is known as suspended impurities. Now let's discuss what is suspended impurities. Here water sample is taken, then it is passed through Watsman filter paper and then weight of impurities present on filter paper is recorded, which is known as suspended impurities. तो अब डिस्कस करते हैं सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़. यहाँ वाटर सैंपल लिया जाता है और उसे वाट्समैन फिल्टर पेपर से पास किया जाता है. यहाँ पर पानी पास हो जाने के बाद फिल्टर पेपर पर जो भी इम्प्यूरिटीज़ मिलती है उसका वेट रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ कहा जाता है. पॉइंट नंबर 2, देन फिल्टर्ड वाटर इज इवेपोरेटेड एंड द रेसिड्यू इज वेड विच इज नोन एज डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज़. पॉइंट नंबर 3, सिंस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नोन, टोटल सॉलिड्स प्रेजेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू milligram per liter. Here known volume of water means amount of water used for testing is let's say 100 ml. मीन्स टेस्टिंग के लिए स्टैंडर्ड तौर पर मान लेते हैं 100 ml पानी लिया जाए तो उसे कहेंगे नोन वॉल्यूम ऑफ वाटर. पॉइंट नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन टोटल सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स विल गिव द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड्स प्रेजेंट इन सैंपल. परमिसिबल स्टैंडर्ड्स, टोटल सॉलिड्स इन पोर्टेबल वाटर शुड बी लिमिटेड टू 500 milligram per liter. They should not exceed 1000 milligram per liter. Now let's see types of hardness and effects of hardness. Our next point is hardness. It is the property of water.
which prevents formation of leather with soap. Now let's discuss in detail about hardness. It means which prevents formation of white mass of bubble produced by soap washing powder when it is mixed with water. यहाँ पर prevents formation of leather का मीनिंग है जब साबुन या वॉशिंग पाउडर जब इस तरह के हार्ड वाटर के साथ मिलाया जाता है, ये हार्ड वाटर उन दोनों को मिक्स होने से और एक दूसरे से रिएक्ट होने से रोकता है, जिससे साबुन या पाउडर का कोई असर नहीं होता. नेक्स्ट पॉइंट इज हार्डनेस कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स and sulfates of calcium and magnesium. Next point is hardness is of two types. First one is temporary hardness. It is caused by bicarbonates of calcium and magnesium, that is Ca and Mg in water. Second type of hardness is permanent hardness. It is due to presence of chlorides and sulfates of calcium and magnesium, that is Ca and Mg in water. Hardness may be determined by soap test according to IS EDTA, that is ethylene diamine tetraacetate. This method is used to decide the total hardness of water. Now we will see difference between temporary and permanent hardness. Temporary hardness, first point is hardness due to the presence of bicarbonates of calcium and magnesium is known as temporary hardness, whereas permanent hardness, it is the hardness due to the presence of sulfates, chlorides and nitrates of calcium or magnesium. It is known as permanent hardness. Point number 2, temporary hardness is also known as carbonate hardness. It causes deposition of scale in boilers after boiling, whereas in case of permanent hardness, it is known as non-carbonate hardness. Point number 3, temporary hardness can be removed by simple boiling or by adding lime to the water, whereas permanent hardness cannot be removed by the simple boiling. It requires special treatment of water. Classification of hardness is given in the following table, in which first column shows amount of hardness in milligram per liter, and in second column classification of water is given. First, if hardness is 75, then water is classified as soft. If hardness is between 75 to 150, then water is classified as moderately hard. Third, for hardness between 150 to 300, water is classified as hard. And last one, for hardness above 300, water is classified as very hard. Now we will see effects of hardness when in excess. First one, inconvenience during cooking due to scale formation. Here scale formation means layer of impurities which is formed on inside surface. Point number 2, more soap consumption during washing. Point number 3, it causes bad taste. Point number 4, it causes discoloration of clothing in dyeing industries. Point number 5, it causes more consumption of fuels in boilers and hot heating systems due to scale formation. Let's see in detail about effects of hardness. Here scale means a layer which is formed on the inside surface of boilers. Hence, heat supplied to the water is prevented by this layer of impurities, and hence more heat is required to heat the water inside the boilers, which increases the cost as well as energy consumption. चलिए इफेक्ट्स ऑफ हार्डनेस को समझ लेते हैं. यहाँ स्केल का मतलब एक ऐसी परत है जो बॉयलर के अंदरूनी सतह पर बन जाती है. इसीलिए पानी को जो हीट दी जाती है वो हीट ये परत रोक लेते हैं. इसीलिए बॉयलर को अधिक गर्मी प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिससे एनर्जी भी ज़्यादा लगती है और साथ ही खर्च भी बढ़ जाता है. पॉइंट नंबर 6, causes corrosion and incrustation of pipelines and plumbing fixtures. Let's see meaning of incrustation. It is a crust or hard coating, or we can say a growth of accumulation of crust. Here picture 1 shows incrustation, which means hard coating formation. इस फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हार्ड परत बन जाती है जिसे incrustation कहा जाता है. Here picture 2 shows corrosion, which means it is the process of decay on a material caused by a chemical reaction with its environment.
Corrosion of metal occurs when an exposed surface comes in contact with gas or liquid and the process speed up due to warm temperature, acid and salt. यहाँ आप देख सकते हैं करोजन के कारण इस पाइप की क्या कंडीशन हो चुकी है। इस पाइप की लाइफ करोजन के कारण कम हो जाती है। करोजन वहाँ देखा जाता है जहाँ पाइप का कोई भी हिस्सा गैस या लिक्विड के संपर्क में आ जाता है। Now let's discuss in detail about chlorides. Now we will see chlorides. Point number 1. Chlorides are present in all natural waters. Freshwater sources contains chlorides ranging from 100 to 2000 milligram per liter. Point number 2. Excess of chlorides in water may be harmful for use. Point number 3. Chlorides can be determined by titrating the water with silver nitrate and potassium chromate. Point number 4. The presence of high quantity of chlorides in river water may indicate pollution of water due to sewage and other human or industrial waste. Point number 4. The presence of high quantity of chlorides in river water may indicate pollution of water due to sewage and other human or industrial waste. Let's see meaning of sewage. Sewage means domestic and industrial waste. Now we will see determination of chlorides in laboratory. Point number 1. Amount of chlorides present in water sample is found out by adding silver nitrate of known concentration and potassium chromate to the water to be tested. Point number 2. Silver nitrate is added till a reddish brown precipitate is formed. Now we will see effects of chlorides. Point number 1. When chlorides are present in water, taste and corrosion takes place. Point number 2. Excess chloride present in water indicates possibility of contamination and is likely to cause disease. Point number 3. If such water is used in boilers, scale formation and sometimes boiler explosion may take place. Now we will see dissolved gases. Point number 1. Surface water contains dissolved oxygen which comes from the atmosphere or due to the activities of algae and other plant life in water. Point number 2. Also, amount of gases like hydrogen sulfide, methane, carbon dioxide, chlorine may be there depending upon the amount and character of unstable organic matter. Point number 3. As the temperature increases, the gases and oxygen present in water reduces. Now we will discuss determination of pH value by electrometric method and its theoretical part. Now our next point is pH value. Point number 1. It denotes the concentration of hydrogen ions in the water and it is a measure of acidity or alkalinity of a substance. Point number 2. Method of denoting pH is small p and capital H. Point number 3. Depending upon the dissolved salts and minerals, water may be classified as acidic or alkaline. Point number 4. pH value indicates acidity or alkalinity. Point number 5. Acidity is caused by mineral acids, free carbon dioxides, sulfates of iron and aluminium. Point number 6. Alkalinity of water is caused by hydroxides or bicarbonates of sodium, potassium, calcium and magnesium. Now let's discuss about the pH scale. From this table we can say that if pH is 0, solution is acidic, that is at 0 pH solution have maximum acidity, and if pH is 14, solution is alkaline, that is at pH 14 solution have maximum alkalinity, and at pH 7 solution is neutral. तो चलिए pH स्केल क्या होता है इस टेबल से समझ लेते हैं। pH स्केल 0 से 14 तक होती है। जहाँ pH 0 है तो उसे कहा जाता है एसिडिक सॉल्यूशन, एंड pH 14 हो तो अल्कलाइन सॉल्यूशन, यदि pH 7 हो तो उसे कहेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन, और pH 0 मीन्स उसे कहेंगे मैक्सिमम एसिडिटी, और pH 14 मीन्स उसे कहेंगे मैक्सिमम अल्कलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 7. pH value is the logarithm of reciprocal of hydrogen ion concentration, that is
pH is equal to 1 divided by log of H plus ion concentration. This is the formula of pH. Point number 8. When hydrogen ion concentration increases, water becomes acidic and pH value reduces. Point number 9. pH value can be determined by electronic method, colorimetric method and electrometric method. Now we will see determination of pH of given liquid by electrometric method using pH meter. This picture shows pH meter and this picture shows pH meter knobs, that is switches. ये है इलेक्ट्रोड जिसे हम सॉल्यूशन में डीप करेंगे, जिससे हमें पीएच वैल्यू का पता चलेगा। चलिए इलेक्ट्रोड को कर देते हैं यहाँ पर इस स्टैंड पर फिक्स। आगे आते हैं बफर सॉल्यूशन। पहला है pH4 सॉल्यूशन और दूसरा रहेगा pH7। अब चलिए देखते हैं पीएच इंस्ट्रूमेंट। यहाँ आप देख सकते हैं डिस्प्ले, जहाँ हमें रीडिंग दिखाई देगी। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 3 स्विच दिखाई देंगे। फर्स्ट स्विच इज टेम्परेचर कैलिब्रेशन, सेकंड स्विच इज फॉर कैलिब्रेशन ऑफ पीएच वैल्यू एंड थर्ड स्विच जिसमें आप देख सकते हैं मिडल पे आपको दिखाई देगा इसमें स्टैंड बाय। इसके बाद है पोटेंशियल मेजर करने के लिए मिली वोल्ट एंड थर्ड इज डिटर्मिनेशन फॉर पीएच वैल्यू। जब भी आपको पीएच निकालना है तो इसको स्विच करेंगे हम पीएच के रेंज पे। चलिए शुरू करते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। एक बात का हमें ध्यान रखना है, जब भी इलेक्ट्रोड को हम किसी भी सॉल्यूशन में डीप करते हैं तो उसे हर बार डिस्टिल वाटर से वॉश ज़रूर करें और कंप्लीटली ड्राई करें। इस इलेक्ट्रोड को हम डीप करेंगे pH4 सॉल्यूशन में और इसके बाद डीप करेंगे pH7 सॉल्यूशन में। इस तरह से इसका कैलिब्रेशन करेंगे। इंस्ट्रूमेंट को हम सेट करेंगे pH मोड पर और इलेक्ट्रोड को हम डीप करेंगे pH4 सॉल्यूशन में। आप देख सकते हैं रीडिंग 4.0 आ चुका है। तो ये था कैलिब्रेशन बाय यूजिंग बफर सॉल्यूशन ऑफ pH4। दूसरा कैलिब्रेशन स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रोड को हमें करना है अच्छे से वॉश और कंप्लीटली ड्राई। अब इलेक्ट्रोड को डीप करना है pH7 के सॉल्यूशन में। यहाँ डिस्प्ले पर रीडिंग आनी चाहिए 7, जिसे हम करेंगे कैलिब्रेट। तो यहाँ हमारा कैलिब्रेशन होता है पूरा, जहाँ हमने यूज़ किया था pH7 सॉल्यूशन। यहाँ दोबारा इलेक्ट्रोड को ठीक से वॉश कर ले। यहाँ हमने एक सैंपल वाटर सॉल्यूशन लिया है जिसका हम pH फाइंड करेंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं हमें रीडिंग मिलती है 7.35। जब pH वैल्यू 6.5 से 8.5 के बीच में आती है तो इस सैंपल को हम पीने के लिए सेफ मान सकते हैं। तो ये थी क्विक प्रोसेस pH फाइंड करने के लिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ pH वैल्यू। अब हम इसमें देखने वाले हैं कंसेप्ट में 3 से 4 पॉइंट्स रहेंगे। फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ वाटर, सेकंड इज pH वैल्यू, थर्ड वन इज एसिडिटी, फोर्थ वन इज अल्कलिनिटी। Next point is what is pH? pH is the H plus ion concentration which is present in the water. Now we can express pH value in terms of mathematical expression which is pH is reciprocal of logarithm of H plus ion concentration. जैसे ही यहाँ पर H plus ion का concentration बढ़ जाता है pH value decrease हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है pH स्केल। pH का रेंज होता है 0 से लेकर 14 तक। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर pH का स्केल है और यहाँ पर pH का रेंज है 0 से लेकर 14 तक, जिसमें अगर सॉल्यूशन का pH वैल्यू 0 होता है तो उसे हम बोलेंगे मैक्सिमम एसिडिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 14। pH वैल्यू अगर किसी सॉल्यूशन का 14 है तो उसे हम बोलेंगे मैक्सिमम अल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और बीच में अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा आपको pH 7। अगर pH वैल्यू 7 है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज परमिसिबल लिमिट फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। पीने के लिए पानी को अगर हम सेफ बोलेंगे जब उसका pH वैल्यू का रेंज 6.5 टू 8.5 के बीच में रहेगा, तो ऐसे पानी को हम पीने के लिए सेफ मानते हैं और उसका रेंज आप देख सकते हैं 6.5 टू 8.5। अब हम इसमें देखने वाले हैं pH डिटर्मिनेशन के मेथड्स। तो यहाँ पर 3 तरह के मेथड्स आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट मेथड इज determination of pH value by using the electrometric method. This is a laboratory method. In this method, we will use electronic device and one electrode. Next method है field measurement. Field measurement में आप देख सकते हैं pocket pH meter, जो आपको field पे pH find करने के लिए काम आएगा। और थर्ड मेथड है इसमें by using the pH strips. Now we will discuss importance of pH value. It helps us in deciding the treatment limit such as coagulation, next is disinfection and water softening process. Now we will discuss about the disadvantages and adverse effect of pH value. pH value अगर ज़्यादा है या लो है तो उसमें आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस का जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाता है। अल्कलाइन वाटर अगर प्रेजेंट है तो वो डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा, जैसे कि डिफिकल्टी इन क्लोरिनेशन का जो प्रोसेस रहेगा उस प्रोसेस में वो डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। और दूसरी बात, अगर पीने के लिए कोई पानी यूज कर रहा है और उसमें अगर अल्कलाइन वाटर अगर प्रेजेंट है और ऐसा पानी अगर हम गलती से पी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखने वाले एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर से क्या होगा कि जैसे कोई पाइप से अगर एसिडिक वाटर फ्लो होता है तो उसमें उस पाइप का करोजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो कि पाइप को डिस्ट्रॉय कर देगा और इस तरह से उसमें लीकेजेस आने के चांसेस है। सेकंड, उसमें एडवर्स इफेक्ट ये है कि पाइप में ट्यूबरकुलेशन का प्रोसेस इसमें हो सकता है, जिसके अंदर ट्यूबरकुलेशन में ये होता है कि इसके अंदर पाइप के इनर सरफेस में कुछ लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे पाइप के फ्लो में डिफिकल्टीज आती है और उसमें पाइप में से जो फ्लो होता है वो डिक्रीज होता जाता है और उसी तरह से वो करोजन क्रिएट करता है और पाइप को वो भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। Now we will see effects when pH is more or less. Point number A, when the value of pH of water is outside the permissible range,
that water is objectionable for use. Also, it gives bad taste and corrosion. Point number B, if water is having pH greater than 9.2 is consumed, it causes bleeding in the stomach, which is dangerous. Point number C, if pH is less than 6.5 and PVC pipes are used to carry such water, the lead is extracted from PVC material and goes to the consumers along with water and forms a slow poison. Our next point is importance of pH in water supply. Point number 1, if the source of water is having pH between 6 to 8.5, quality of that water is considered to be excellent and acceptable. Point number 2, importance of pH in coagulation. For effective coagulation, it is necessary to maintain pH range between 6.5 to 8. Point number 3, importance of pH in chlorination. For effective disinfection, pH should be 7 to have a higher efficiency. Disinfection means process of removal of bacteria, ऐसी प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया को हटाया जाता है. Point number 4, corrosion control. Water below pH 6.5 is highly corrosive, and at pH 7 corrosion is absent, and alkaline waters are less corrosive. Our next point is standards for drinking water. Following table shows pH standards for drinking water. In this table, authority, acceptable limit and maximum permissible range is given. First authority, World Health Organization and Government of India has given acceptable limit as 7 to 8.5 and maximum permissible range is also same, that is 6.5 to 9.2. And last one authority is BIS has given acceptable limit and maximum permissible range as 6.5 to 8.5. Hope you like the information given in this video. If you are watching my channel for first time, then click on subscribe and share with all your friends. Thanks for watching. Jai Hind, Vande Mataram.